नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की व्याख्या की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 70 की व्याख्या करेंगे। श्लोक 70 बाबा की विशिष्ट शैली में है। छोटे से दिखने वाले इस श्लोक में बाबा कुछ ऐसा कहते हैं कि लगता है कि पिछले वाक्य का अगले वाक्य से कोई मेल नहीं है, लेकिन कुछ देर ठहर कर अगर विचार किया जाए तो समझ आने लगता है कि यह सब एक विशाल पहेली के अलग अलग और ज़रूरी घटक हैं। व्याख्या में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन कर दें कि हम भी आप ही की तरह चिदाकाश गीता के विद्यार्थी हैं। इसके विद्वान होने का हम न तो दावा करते हैं, न ऐसा कोई भ्रम हमें है। आप ही की तरह हम भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने समझने के इस क्रम में जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उसे आपके साथ साझा करते हैं। अगर हमारे निष्कर्षों से आप सहमत न हो तो आपका स्वागत है। आप हमें अपनी व्याख्या भेजें, हम उसे भविष्य में ज़रूर शामिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चिदाकाश गीता के संक्षिप्त परिचय की ओर। भगवान नित्यानंद भारत के महान सिद्ध संत थे। साल 1922 से 1924 के बीच वे निरंतर ध्यानावस्था में रहा करते थे। बीच बीच में जब चेतना बाहरी जगत में लौटती तो सूत्र रूप में कुछ वाक्य बोलते थे। इन्हें लिपिबद्ध करके उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान या गीत, अर्थात ब्रह्म का गीत। अब श्लोक संख्या 70 का अंग्रेजी अनुवाद। When you rub a match to the side of a box, you obtain fire. You should cook every day. You should avoid all distinctions. When the recipient is fed, he should be initiated. That man who has the power of discrimination should be initiated. बाबा के संक्षिप्त लेकिन गूढ़ श्लोक को हम छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले हिस्से में बाबा कहते हैं, जब आप एक माचिस की तिल्ली को उसके किनारे से रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है। अब यहाँ बाबा फिर माचिस की उपमा दे रहे हैं। इससे पहले भी चिदाकाश गीता की श्लोक संख्या 16 में बाबा कहते हैं, मनस माचिस की तिल्ली है, बुद्धि माचिस की डिब्बी का किनारा है। जब मनस का बुद्धि से घर्षण होता है उस समय आत्म साक्षात्कार की अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि है आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति। इस तरह जैसे माचिस की तिल्ली को डिब्बी से रगड़ने से आग की उत्पत्ति होती है, उसी तरह मन और बुद्धि के लगातार घर्षण, लगातार संग से वास्तविक सत्य की प्राप्ति होती है। यह वास्तविक सत्य है आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का। इसलिए अंतश्चेतना की इस लपट को जागृत किए रखने के लिए मन और बुद्धि की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया जरूरी है। यह बुद्धि साधारण सांसारिक बुद्धि नहीं है, बल्कि सच्चित प्रेरित विवेक है। यह हमारी आत्मा की वह उपाधि है जिसे संसार व्यवहार के लिए मनस के साथ भेजा गया और निराकार निर्विकार आत्मा जीव के रूप में भासित होती है। श्लोक का दूसरा हिस्सा, बाबा कहते हैं कि तुम्हें रोज भोजन बनाना चाहिए। अब यह भोजन भी प्रतीक है। प्रतीक है आत्मविश्लेषण का, आत्मदर्शन का, आत्मिक अनुशासन का। भोजन आग पर ही बनता है, हम सभी को पता है। यहाँ बाबा नित्यानंद का बताया हुआ यह भोजन उस आग पर बनता है जिसकी चर्चा बाबा इस श्लोक में इससे पहले कर चुके हैं। यह आग मन और बुद्धि के परस्पर संयोग से पैदा होती है। इस आग पर आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन का भोजन तैयार होता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, यह भोजन हमें रोज बनाना है। जैसे भौतिक शरीर के पोषण के लिए हमें रोज भोजन बनाना पड़ता है और उसे ग्रहण करना अनिवार्य है, उसी तरह आध्यात्मिक देह के पोषण के लिए हमें आत्मदर्शन का भोजन रोज बनाना और ग्रहण करना है। श्लोक के अगले भाग में बाबा कहते हैं, हमें हर प्रकार के भेदाभेद से बचना चाहिए। यह हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें जगत के प्रति द्वैत भाव का त्याग करना चाहिए। संपूर्ण जगत एक ही परम चेतना की अभिव्यक्ति है। या ऊंच नीच, छोटे बड़े, पतित पवित्र का भेद नहीं है। वस्तुतः आत्म साक्षात्कार के बाद यह भेद टिक भी नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमें पता चलता है कि चराचर के मूल में एक ही दिव्य अस्तित्व है। श्लोक के चौथे भाग में बाबा कहते हैं, जब शिष्य तैयार हो तभी उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। जब ग्रहणकर्ता में ज्ञान को ग्रहण करने की गुरुता और योग्यता आ जाए तभी उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे बिना आग में पके मिट्टी का घड़ा कच्चा रहता है, उसमें पानी को ग्रहण करने की, उसे संग्रहित करने की योग्यता नहीं होती है। अगर कच्चे घड़े में पानी भरने का प्रयास किया जाए तो वह गलकर टूटकर बिखर जाएगा। उसी तरह बिना पात्रता के दिया हुआ ज्ञान निरर्थक सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन या किसी गुरु द्वारा दीक्षा लेने के लिए शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमें कब योग्य गुरु मिलेगा।
बाबा का ये वाक्य हमारी इस परेशानी का सरल समाधान है। बाबा के अनुसार जब हम में योग्यता विकसित हो जाएगी तो हमें हमारे योग्य गुरु स्वतः ही मिल जाएंगे। हमें उनके लिए भटकने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं आकर हमारा हाथ थाम लेंगे। श्लोक के अंतिम भाग में बाबा उस आवश्यक योग्यता की भी उल्लेख करते हैं जिसके विकसित होने पर गुरु स्वतः हमें दीक्षित करने के लिए आ जाएंगे। बाबा कहते हैं वह पुरुष जिसे विवेक की शक्ति प्राप्त हो चुकी है उसे ही दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। यह विवेक अर्थ सत्य को असत्य से, धर्म को अधर्म से पहचानने की क्षमता है। यह श्लोक सुझाता है कि जो व्यक्ति इस विवेक को धारण कर लेता है वह आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान की जटिलताओं को समझने और उनका सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है विवेक। बिना सही निर्णय लेने की क्षमता के व्यक्ति भ्रमों और भटकन में आसानी से घिर सकता है। इसलिए दीक्षा लेने से पहले विवेक का होना जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग पर कई साधनाएं, गुरु और दर्शन होते हैं। इनमें से सही का चुनाव करना और गलत को पहचानना ही विवेक का काम है। विवेकहीन व्यक्ति भ्रम में पड़कर गलत रास्ते पर जा सकता है और जिससे आध्यात्मिक हानि भी हो सकती है। आध्यात्मिक साधना कठिन होती है और इसमें आत्म अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। विवेकवान व्यक्ति ही समझ सकता है कि गुण क्यों जरूरी हैं और इन्हें कैसे अपनाया जाए। विवेक का लाभ यह भी है कि विवेकी शिष्य का आध्यात्मिक विकास तेजी से होता है। सही रास्ते का चुनाव, साधनाओं को सही अभ्यास और गुरु का सही मार्गदर्शन मिलने से लक्ष्य की प्राप्ति भी जल्दी होती है। इसलिए कह सकते हैं कि विवेक ही आध्यात्मिक दीक्षा लेने की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति के पास यह शक्ति है वह जल्दी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर यह श्लोक आध्यात्मिक साधकों को नियमित अभ्यास करने, द्वंद्वों से ऊपर उठने और जब वे आध्यात्मिक सत्यों की गहरी समझ और अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार हों तब दीक्षित होने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह श्लोक आध्यात्मिक साधना के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो हर साधक के लिए लाभकारी हैं। नियमित अभ्यास मन को मजबूत बनाता है, द्वंद्वों से ऊपर उठना मन को शांत करता है और सही समय पर मार्गदर्शन लेना आध्यात्मिक प्रगति को गति देता है। तो मित्रों, यह थी चिदाकाश गीता की श्लोक संख्या 70 की व्याख्या। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई व्याख्या के साथ। जय नित्यानंद। Hello friends and welcome to this episode of Chidakash Gita commentary. Today we will discussing verse number 70. This verse is in Baba's typical style. It is a short verse but it seems to be a bit confusing at first glance. However, if we take a moment to reflect on it, we can see that it is all part of a larger puzzle. Before we begin our commentary, let us reiterate that we are students of Chidakash Gita just like you. We do not claim to be experts, nor do we have any illusions about it. We are simply trying to understand it along with you. We share with you whatever conclusions we come to in this process of learning and understanding. If you disagree with our conclusions, you are welcome to do so. Please send us your own interpretation. We will definitely include it in the future. Now, let us move on and have a brief introduction to Chidakash Gita. Bhagwan Nityanand was a great sage of India between 1922 and 1924. He remained in a continuous state of meditation. In between, when his consciousness would return to the external world, he would speak a few sentences in the form of aphorisms. These were written down by his devoted follower, Tulsi Amma, named Chidakash Gita. Chidakash means Brahman and Gita means song or hymn, hence the song of Brahman. Now the English translation of verse numbers 70. When you rub a match to the side of a box, you obtain fire. You should cook every day. You should avoid all distinctions. When the recipient is fit, he should be initiated. That man who has the power of discrimination should be initiated. Baba says in this short but cryptic verse, number 1, when you rub a match against its side, fire is produced. Number 2, you should cook food every day. Number 3, you should avoid all kinds of discrimination. Number 4, when the recipient is fit, he should be initiated.
Let us try to understand these 4 parts one by one. In the first part, Baba says that when you rub a matchstick against its side, fire is produced. Here Baba is again using the metaphor of a match. Earlier, in a verse number 16 of Chidakash Gita, Baba says that the mind or manas is like a matchstick, and the intellect or buddhi is like the side of a matchbox. When the mind rubs against the intellect, the fire of self-realization is ignited. This fire is spiritual awakening, the attainment of knowledge and enlightenment. Just as fire is produced by rubbing a matchstick against the box, so too is the real truth. The knowledge of self-realizations is attained by the constant friction, the constant association of the mind and intellect. This real truth is the self-knowledge and the self-realization. Therefore, the mutual interaction of the mind and the intellect is necessary to keep this flame of consciousness alive. This intellect is not ordinary worldly intellect, but viveka inspired by Sat Chit. It is that attribute of our soul which is sent with the mind in this world, and Atman appears as Jiva. Now the second part of the verse. Baba says, you should cook food every day. Here food is also a symbol. It is a symbol of self-analysis, introspection, and spiritual discipline. Food is cooked on fire, as we all know. Here the food that Baba Nityanand talks about is cooked on the fire that Baba has already discussed in this verse. This fire is produced by the mutual union of the mind and the intellect. On this fire, the food of self-analysis, introspection is prepared. But that is not enough. We have to cook this food every day, just as it is essential for us to cook and eat food every day for the nourishment of the physical body. So too, it is essential for us to cook the food of introspection every day for the nourishment of the spiritual body. In the next part of the verse, Baba says, we should avoid all kinds of discrimination. This teaches us that we should give up the feeling of duality towards the world. The entire universe is a manifestation of the same supreme consciousness. There is no distinction of high and low, big and small, sinner and saint here. In fact, after self-realization, this distinction cannot even survive. Through self-realization, we come to know that there is only one divine existence at the root of the movable and immovable. In the fourth part of the verse, Baba says, when the recipient is ready, he should be initiated. When the recipient has the seriousness and the ability to receive knowledge, then he should be given knowledge. Just as an unbaked clay pot remains raw without being cooked in the fire, it does not have the capacity to absorb or store water. If an attempt is made to fill water in an unbaked pot, it will break into pieces. In other words, it is important for the disciple to be mentally and spiritually prepared to receive spiritual guidance or initiation from a guru. We often worry a lot about when we will find a suitable guru. This sentence of Baba is a simple solution to this problem of ours. According to Baba, when we develop the qualification, we will automatically get the guru who is worthy of us. We do not need to wonder for them, they will come and hold our hands themselves. In the last part of the verse, Baba also mentions the necessary qualification that when it develops, the guru will automatically come to initiate us. Baba says, only that man who has attained the power of discrimination has the right to take initiation. Here, discrimination means the ability to distinguish truth from falsehood, dharma from adharma. This verse suggests that a person who possesses this discrimination is ready to receive spiritual initiation. This is because he becomes more capable of understanding and dealing with the complexities of spiritual practice and self-realization. One of the most important things for walking on the spiritual path is discrimination. Without the ability to make right decisions, a person can easily get caught up in illusions and wanderings. Therefore, it is necessary to have discrimination before taking initiation. There are many practices, gurus, and philosophies on the spiritual path. It is the role of discrimination to choose the right one from them and to identify the wrong one.
A person without discrimination can go astray and go on the wrong path, which can also lead to spiritual harm. Spiritual practice is difficult and requires self-discipline and dedication. Only a person with discrimination can understand why these qualities are necessary and how to adapt them. The advantage of discrimination is that it enhances the speed of spiritual development. By choosing the right path, practicing the right practices, and getting the right guidance from the Guru, the goal is also achieved quickly. Therefore, it can be said that discrimination is the first step to taking spiritual initiation. A person who has this power can make rapid spiritual progress and attain true knowledge and liberation. Overall, this verse emphasizes the importance of regular practice for spiritual seekers, rising above dualities and being initiated when they are ready to gain a deeper understanding and experience of spiritual truths. In this way, this verse presents three important principles of spiritual practice, which are beneficial for every seeker. Regular practice strengthens the mind. Rising above dualities calms the mind, and taking guidance at the right time accelerate spiritual progress. So friends, that was our commentary on verse number 70 of the Chidakash Gita. I hope you found it helpful. If you liked it, please like and share the video so that others can benefit from it. If you haven't already, please subscribe to the channel and turn on the notification bell so you don't miss any of our future videos. Until next time, Jai Nityanand.